डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल ने कोलकाता में एडवांस्ड आई केयर के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें नजर ठीक करने में बड़ी सफलता मिली। मशहूर सिंगर पद्मश्री उषा उत्थुप भी इस जश्न में शामिल हुई। 45 साल की महिला को बिना चश्मे के नजर वापस मिली, जिसे दोनों तरफ से ज्यादा मायोपिया था और जो लेसिक के लिए सही नहीं था। आइए देखते हैं न्यूज टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। Very proud moment for us today as Dr. Agarwal Eye Hospital, Kolkata completes 10 remarkable years of service to the city. Dr. Agarwal is one of India's largest eye care institution, founded on the vision of Professor Amar Agarwal and known globally for pioneering advanced surgical technique in cataract, cornea and refractive care. আজকে আমাদের এই 10 বছরের সফর বলা যেতে পারে, সেই সফরটা যখন আমরা আজকে সেলিব্রেট করছি সবাই মিলে, তখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পদ্মভূষণ শ্রীমতী উষা উত্তম। I would request Dr. Samar Sengupta, specialist ophthalmologist from Dr. Agarwal Eye Hospital. 10 বছর হয়েছে আমাদের, আর আপনাদের ভালোবাসা শুভেচ্ছাতে আমরা অনেক পেশেন্টের অপারেশন করতে পেরেছি যারা খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছে। বাট আমাদের সবসময় একটা ইচ্ছে থাকে বা সবসময় আমাদের চেষ্টা কি আমরা এরকম জিনিস করব যারা কেউ করতে পারছে না বা পেশেন্টের দৃষ্টি ভালো করে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি। সেরকম একটা কেস আমি আপনাদের সামনে বলবো যেটা আপনারা বুঝতে পারবেন, দেখতে পারবেন। Hello everybody, namaskar, namaskaram, sat sri akal, assalamu alaikum. It's 10 years. Yes. I can't believe that I did the last one 10 years ago in Koshba. It was really marvelous, and I think the kind of things you all do to make people see and to make people live again with a vision of hope and trust and faith. I think that's really marvelous. I think sight is something which we all take for granted. And I remember when we opened the one in Koshba, just like that, she said, why don't you check your eyes? Ami to ekto bhoy kori na. I think my blood pressure must have gone up high because I'm scared of doctors, okay? Really scared. I'm sure most of you are. Kintu apnara bolben na, ami bole dicchi apnar jonne. Whenever you see a doctor, you have that what is it called? White apron syndrome, right? It's terrible. But she insisted that I should go and sit, and I said, okay. So I went and sat over there, and she said, you have the onset of slight cataract. And I started crying immediately. And I said, I always thought cataract is something so serious and something so terrifying. But then when she said that to me, first reaction was to cry, then was to wipe my eyes, and then I said, no, I think it must be because I'm singing for so many years, so many bright lights in my eyes all the time, you know, that. I made excuses. And one keeps making excuses to put these things off. I mean, somehow you always think that Bhagwan theek kore debe. But it's not like that. You have to make up your mind that there is something wrong. And if you get your diagnosis right, and if once somebody has diagnosed you, then it's easy to set it right. If you don't diagnose it correctly, you can never set the problem right. For me, in my personal life as well, it's all about realizing what is wrong. And once you get that right, then everything else falls in place. Subsequently, I got my cataract done, both eyes, and after 1 week, of course. And everything is fine. It's absolutely marvelous, except that
I still cry a lot, and I advocate crying to everybody because it's a therapy. It's a good thing to cry. And you know, the kind of work that Agarwals are doing is really amazing. It's really amazing. And we need more people like you all to really do this. Let's have a big hand, come on. And I have always been associated with the School for the Blind for the long time. Both in Surat and then in Kerala, then of course in Calcutta. They're so beautiful, they're so handsome, all of them. Still they don't look for their own good. It's always to help somebody do something good. And I want to say, I'm really grateful to call me over here, and I want to say thank you to Samresh for making this happen, and also to Lahilida. I'd like to say that look at our ballet, that why would a singer like me or a person like me get involved with something like this? I think the more people like me get involved with this, the better it is. Karan Jokhan Amra Boli, then people listen. And it's wonderful to be able to say that congratulations to all of them for doing this great, great big work. Anjana sa magar kuch pehchana sa halka phulka shabnami रेशम से भी रेशमी सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। आँखों के लिए एक छोटा सा सपना भी ठीक है, लेकिन सच्चा होना चाहिए कि हम लोग सब उन आँखों से सपने देखें। कभी कभी आंखें बंद करके सपना देखते हैं, कभी खुला खुला देखते हैं सपने। And I think that's what the Agarwal doctors make the people see through their eyes. Thank you so much. आँखों से पी ले, होठों से पी ले, जीना हो जितना मस्ती में जी ले, मुझ जैसा देखा न होगा कहीं। देखो 36, 24, 36, देखो 36, 24, 36, measurements ता बदले गए थे, किंतु when I think of this आँखों से पी ले, I mean, you know, there are so many songs which suddenly come up to my mind, which I've been singing. Aankhein dhoka kha nahi sakte, so many songs. But I think we have to say that we have nothing to worry as long as we have Dr. Agarwal's clinic right here. So I would say, Kolkata amar ma ar kichu jani na, Kolkata here jabe taki kore hoy, যতই বিদেশে যাই এখানে ফিরতে চাই, যে টানে আমায় টানো সে কি জাদু নয়। মিলনের তীর্থে হাতটি রেখে হাতে, এসো আজ প্রাণে প্রাণে মেশাবো এ প্রাণ। হাজার ঝামেলা থাক ভাই বলে দেব ডাক, একসাথে গেয়ে যাব আগামীর গান। ও হো ও হো ও হো। So let's make, and or shall I say, let's keep Kolkata clean, green, unpolluted, justice, safety, security, not just for women, but also for men. Let's work together to bring back Calcutta to its former glory, or better than that, bigger glory. Thank you so much.
आज हम लोग का यहाँ 10 साल पूर्ण हुआ है कलकत्ता में, और 10 साल में हम लोग का 3 हॉस्पिटल है। एक पीएलएस में है, एक सॉल्ट लेक में है और एक कस्बा में है। इस 10 साल में बहुत सारा पेशेंट, हज़ारों लाखों पेशेंट मूल्यवान हुए हैं दृष्टि साइड से। और पेशेंट को हम लोग नया पद्धति से इलाज करते हैं, नया चिकित्सा करते हैं, और उनको जो दुनिया साफ नहीं देख पाते हैं उनको हम लोग रोशनी देके इस दुनिया साफ दिखाते हैं। सपना देखने के लिए फिर से पुनः आशा देते हैं। और बहुत तरह का चिकित्सा है जो अग्रवाल ही स्टार्ट किया है। जो आज एक पेशेंट के साथ जो अशोक कुंडू है आप देखे हैं, वो पेशेंट को हर जगह से रिफ्यूज़ किया गया था। वो लोग फिर हम लोग के पास आए, हम लोग एक नया तरीका से, जिसको एसएफटी बोला जाता है, उससे उनको नया तरीका से दृष्टि दिया गया। और वो अभी बहुत ही खुश हैं। और वो बोले डॉक्टर साहब आप जहाँ बोलिएगा हम आने के लिए तैयार हैं। उनको हम लोग बोले भी नहीं आप आके अच्छा बात बोलिए, वो बोले नहीं हम ज़रूर बोलेंगे, ताकि बंगाल का लोग, कलकत्ता का लोग जाने कि डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल एक अच्छा चिकित्सा देता है।